dear students to the online coaching. Myself Chirag Joshi. Dear students, we are on the exercise 14.2 to find out mode. First question I have taught you in details in yesterday's lecture. Dear students, today I will give you hint to find out mode of the question number 2 and 3. So you can calculate yourself at home also. Dear students, second question and the third question I have written on the board. First of all, you should know the formula. At least formula तो आपको याद होनी चाहिए. Mode equals to L plus into bracket F minus F0 divided by 2F1 minus F0 minus F2 into H. फॉर्मूला आपको याद रहनी चाहिए. इन सेकेंड क्वेश्चन अभी देखो हमें किस किस चीज की जरूरत है. हमें L की जरूरत है, F1, F0, F2, H. तो सबसे पहले मैं आपको H फाइंड करके दिखाता हूं. H equals to 20 minus 0, that is 20. So H is 20. अभी हमें ये ऑब्जर्व करना है इस फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है. We have to observe it, which is the highest frequency. And according to me, 61 is the highest frequency. So 61 will become your F1. So F1 equals to 61. उसके ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F0. So F0 equals to 52. उसके नीचे की जो फ्रीक्वेंसी है वो है F2. So F2 equals to 38. अभी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी 61 उसके सामने का क्लास वो हमारा मॉडल क्लास है 60 to 80 और ये जो 60 है वो हमारे लिए L है. So L equals to 60. I hope dear students each and everything is clear in this question. It is clear? Okay. So you have to just substitute the value and get the answer. Third one. Same procedure we have to follow. Highest frequency. Please observe what is the highest frequency. Highest frequency is 40. So F1 for third question that is 40. उसके सामने का क्लास 1500 to 2000 and this is 1500 is our L. F1 के ऊपर की फ्रीक्वेंसी वो है F0. So F0 equals to 24. F1 के नीचे की फ्रीक्वेंसी वो है F2. F2 equals to 33. कोई भी एक क्लास सिलेक्ट कर लीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए, वो आपका H रहेगा. 1500 minus 1000 that is 500. Dear students, I hope each and everything is clear in your mind. मैंने आपको पहला सम करके दिखाया, दूसरे और तीसरे की हिंट दी है. Now please dear students be careful and understand it. Now you have to solve full exercise. If you have any doubt, please type a message in the comment box. Thank you dear students. Have a nice day.